All right, we are live. Hello, good evening. Welcome back to another session of Hindu analysis. Today is 24th of October. It's a Thursday and we are live. Let's quickly present our presentation and then begin the class. If you guys are here, please let me know in the chat box if you have joined the stream. Raj Nandini is here, Mishika is here. Good afternoon, Kashish. Good afternoon, Priyanshi. Good afternoon, Satviki. Good afternoon, Adrija. Good afternoon, Pro Gaming. Good afternoon, Nandini. Chalo, ठीक है. Many of you have already joined. We'll wait for a few more seconds. Let more people join the stream, and then we'll start today's Hindu analysis. काफी interesting topics हैं आज. Pretty diverse topics, many topics today. So we'll have an overview of the newspaper as well as go in details of those topics. Good afternoon, Dhriti. चलो ठीक है, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. कैसा रहा आप लोग का कल वाला मॉक टेस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गेव द मॉक टेस्ट यस्टरडे? हाउ डिड इट गो फॉर यू? हाउ वाज द मॉक टेस्ट फॉर वेंसडे? बिकॉज आप लोग क्लास नहीं आए थे कल एंड आई गॉट टू नो दैट यू आर अपियरिंग फॉर द मॉक टेस्ट, सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. How was the yesterday's mock for everyone? Was it easy, moderate, difficult, went well, went bad? Raj Nandini is giving it today. Okay. What about others? GK of Countdown 12 was very tough. कोई बात नहीं. Nandini is saying moderate. Yes, it was okay. Moderate. Okay. ठीक है. चलो बढ़िया है. People who haven't taken the mock, please do that. Please take your mocks consistently. If you don't take it the same day, at least take it the next day. But don't miss out on your mocks. Okay, let's begin our discussion for the day. If you guys are ready to start, can I quickly have a ready in the chat box from everyone so that we can begin? Ready in the chat box very quickly. Are we ready to start, guys? Okay. Perfect. Chalo, let's start. So today is 24th of October. It's a Thursday, and we are back with the Hindu analysis. Let's look at our agenda for today. The first is the headline news: Xi Jinping meeting Modi ji, and they had some discussion. So actual news, we'll talk a little bit about that. Then we have the discussion about a particular scheme, which is called the PM Shri scheme. This is in news again because the Delhi government has accepted and signed an MOU with the government to incorporate this scheme in the state of Delhi. Pehle, this scheme has been in operation for 2 years, but pehle the Delhi government did not agree to it. Still, a lot of state governments have not agreed to it for multiple reasons. We'll look at that. And what is the Shri scheme? We'll talk about that. Then there is an interesting editorial article on the Manipur crisis. What is the actual root cause of the crisis and how we can possibly resolve them through constitutional mechanisms. Then we have news related to the disease called Kalahaard. India has eliminated this disease from the country. And what are the criteria for elimination? What is this disease all about? What are its symptoms? What are its types of carriers? We'll talk about that. Then there is another editorial article on the global supply chain. We have talked about this before. Let's see if there is any new perspective which we are getting today. And then there's an article on cyber frauds, which says that a large part of our GDP would go away in cyber frauds in the coming years. I think something close to 1%. So, yeah, we'll discuss that. And then, of course, three new vocabulary words for the day. So, that is the agenda. Quite an extensive list of topics to cover today. So, we'll go a little fast. Let's have an overview of the newspaper and then we'll begin our discussion for the day. So, I'll present the newspaper for you guys. Okay, I hope it is visible.
So this is the first topic. Modi Xi welcome border pact, seek to rebuild ties. So this is a bilateral meeting which has happened after approximately 5 years since the last formal meetup happened between these guys, and now they have ended the standoff, which was military standoff, which was in place in Demchok, Depsang, basically along the LAC. After 4 years, we have reached a mutual agreement, and then de-escalation would take place slowly and gradually. Then this is a statement made by Modi ji on the BRICS conference that BRICS nations should strengthen financial integration. This is in line with us offering our UPI technology to other countries, promoting trade in local currencies, de-dollarization, all of those things. We'll talk a little bit about that. States can regulate industrial alcohol, says Supreme Court in an 8 is to 1 majority judgment. This is not that important for you, but yeah, entry 8 में आता है in the state list of 7 schedule, everything related to intoxicating liquor. Supreme Court sets aside and CLAT order on biojuice, not important. 2 years after launch, Delhi government signs MOU with Education Ministry to implement the PM Shri scheme. This is the scheme I was telling you about. The PM Schools for Rising India is the full form of the scheme. The scheme is essentially to promote more holistic, comprehensive, practical education in schools, primarily government schools and KVs and Navodaya Vidyalayas. So we'll talk a little bit about that when we come to our analysis. This is politics related news, not important for us. Then LG expresses regret, not important, not important, not important. अरे बाप रे, क्या तो ऐड है. Maharashtra BJP leaders set to file nomination as okay, not important, politics related news. Mhm. Kambala is a sport. This is again with respect to your animal related rights and क्या animal वाले sports होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो इस पे hearing adjourn हो गई है. Kambala is a sport played usually in the southern states, तमिलनाडु, कर्नाटका and all. एक और भी sport था जिस पे बहुत ज़्यादा debate and controversy हुई थी. Sport also related to bulls. Can you guys tell me the name in the chat box? Which sport I'm talking about? A lot of controversy, Supreme Court hearings, and a judgment also came on that. Do you guys know the name? Hint दे दूं मैं, जे से नाम है उसका. चलो, तो नेक्स्ट इज मेक ओवर कर्नाटका's luxury train golden chariot to be on track. ठीक है, ओके. महबूबा Mufti saying something not important. This is also not important, not important. Everything politics related you can easily skip. This is an editorial article by Faizan Mustafa sir and Mr. Dheeraj Murthy. This guy was my senior when I was in college. When I was in fifth year, he was in. When I was in the first year, he was in the fifth year. So he was 4 years seniors to me. Also stood for presidential elections. Lost the election though, but yeah, nice guy. So yeah, this is an article by both of them which talks about the Manipur crisis and how we can manage the diversity. The issue is about managing diversity rather than just controlling violence. We need to address the root cause of violence. Why is the violence, going on for such a long time? And how it just cannot be countered with brute force. You have to understand the key core issues of the tribes which are at conflict. They also give you examples. Firstly, they tell you about constitutional provisions for these northeastern states, special provisions in the constitution for these states, which are mentioned here. Then they give you an example of the case of Tripura on how the sixth schedule was used to maintain peace in Tripura. We were talking about the sixth schedule in a previous Hindu analysis as well, that how it contains special provisions and it provides more autonomy to these states by establishing mechanisms like the district council, which can review every law, which can make new laws, which can do a lot of things for these sensitive areas, scheduled tribe and scheduled caste related areas. Words that Manipur needs to ponder over. So these are some takeaways which they have given. We will talk about this. Then we have the shifting sands within global supply chain. This is an editorial article, also quite interesting. This talks about the context of the US and Israel's pager attack and how it has re-emphasized the need of diversifying the supply chain, not just for India, but also for other countries. So they give you an example of how US has imposed a 100% tariff on EVs, which are imported from China. So if you want to buy an EV which is made by China in the US, you would have to pay 100% extra cost. इंडिया में भी है लग्जरी कार्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है. But yeah, they talk about how we can move from efficiency to resilience to security. So this is basically diversification and not just relying on one particular country for your supply chain. And India is also following this
line of thought that we need to have supply chain security. We cannot just depend on oil on just one particular country, or for minerals for one particular country, or defense deals for one particular country. We need to have multiple sources. Then we have Trump's toxic politics, not important for us. Delhi's challenges in school education, also not important for us. This we have already discussed. Delhi's population, not population, pollution and farm fire, stubble burning. We have discussed all of this. Then what else is there? Boeing 737's defective radar system. Okay, not important. KG Subramaniam centenary year. Not important. If you want, you guys can read those articles, but from a competitive exam perspective, they are not that relevant. And now that we're in the last leg of the preparation, I want you to focus more on things which are directly related to your preparation rather than ancillary studies. Ganderball attacker caught on CCTV, security tightened. Okay. Okay. This is related to a terrorist attack which happened. Cyber fraud losses could amount to 0.7% of GDP, says ministry study. So this Home Ministry has a body which is called I4C, Indian Cybercrime Coordination Center, and they have made this projection that 0.7% of GDP, that is approximately 1.2 lakh crore, would be lost to cyber fraud, cyber crimes. We'll come back to the article when we discuss it in detail. And what else is there? MV allies differ on deal to contest 85 seats. No left Congress alliance. All right. NCP releases list. Ajit Pawar to contest. Okay. Nothing important here. Million people to be moved out of Dana's path in Odisha. This is the cyclone. We have already discussed this. Stubble burning goes against right to live in pollution-free spaces. This is something which the Supreme Court recently said. We already talked about stubble burning and all of those things. Retiring CJI withdraws from hearing in marital rape case. So who's the next coming CJI? I think I have discussed this as well. Justice Chandrachud is retiring, and who's going to replace him as the new Chief Justice of India? Please tell me in the chat box very quickly. India close to finalizing industry carbon targets ahead of Conference of Parties meet. Where is the Conference of Party meet happening? The COP meet is going to happen where? This is also something which we have discussed. So as you see, these are recurring topics. Most of the topics are interrelated and recurring multiple times in the newspaper. So if you are regular to these sessions, you would have a good understanding of most of these topics. We hardly are now getting new topics which we have probably not discussed even once. Supreme Court sets aside in CLAT relief. Okay. India cannot risk another bout of inflation, says governor. Sullivan defends Biden's industrial policy. Okay. Nothing important here. Sports में कुछ नया है क्या? नहीं. India lost to Germany, by the way, in the hockey match. Sad. Second test match start होने वाला है with New Zealand. But you guys should focus on studies. Chalo, theek hai. That is the newspaper for the day. Let's come back to our analysis. Let's talk a little bit in detail about all of these topics which we discussed. All right. So beginning with the, let me go back to the presentation. Let me look at your responses as well. Sanjeev Khanna, Justice Sanjeev Khanna is the right answer. Jallikattu is the right answer. And Azerbaijan, specifically Baku, which is the capital of Azerbaijan, is the right answer. It's not Colombia, it is Baku, Azerbaijan. Priyanshi. Okay, chalo, let's talk about the articles in a little bit of detail. सबसे पहले बात करते हैं शी जिनपिंग एंड चाइना वाले इशू की. इसके हम कल भी बात कर चुके हैं, सो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. बेसिकली दिस वाज अ फॉर्मल bilateral meeting which happened after 5 years between Modi and Xi Jinping, and they talked about the military standoff which has been eased, and they said that they have set the process in motion for bringing the relationship between India and China back on track, back on normal path, and they have said that this is a priority for both the sides, and they did not go into the details of how the standoff began, but वही है कि they are saying कि अब it is very important for us to focus on global peace, stability and progress, and for that India-China relationship is very crucial, and maintaining peace and stability on the border is our priority. Mutual trust and mutual respect हम करेंगे, एक दूसरे की mutual sensitivity दिखाएंगे on our issues, and we'll consolidate our relationship with each other. So that is what was said by both the parties. अब इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने का तो है नहीं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. ब्रिक्स की बात करते हैं. जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो कह रहे हैं कि we should
strengthen our financial integration. The key reason behind this is, the hegemony of dollar जो है उसको counter करना है आपको, de-dollarization जिस concept को हम कहते हैं. So we are going to promote our local currencies when we are talking about bilateral trade or trade amongst BRICS countries for more financial integration, ताकि जो हम डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहे. अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे स्वैप करेंसी एग्रीमेंट्स की. विच कंट्री आर वी गोइंग टू स्वैप करेंसीज विद टू हेल्प देम in their financial crisis? Do you guys remember that? We talked about that in the Hindu analysis. We're going to help a certain country with their debt through swap currency agreements. Although that country is not a part of BRICS, but still. I just want to know if you guys are taking notes of the classes and are aware in the classes. तो ब्रिक्स समिट जो ये हो रही है, ये रशिया में हो रही है, कजान में हो रही है, टाटरस्तान में हो रही है. टाटरस्तान इज अ रीजन एंड वहाँ का कैपिटल है कजान. एंड इसमें मोदी जी गए हुए हैं. यहाँ पे इन्होंने ब्रिक्स की तो बात करी, साथ में यूपीआई सिस्टम की भी बात करी, दैट इट वाज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इट इज अ ह्यूज सक्सेस इन लॉट ऑफ कंट्रीज. लॉट ऑफ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द सिस्टम, बी इट सिंगापुर, मलेशिया, ऑल ऑफ दोस कंट्रीज. एंड इन्होंने बात करी कि हमें जो है डीएस्केलेट करना है इश्यूज, बी इट योर रशिया यूक्रेन इशू, बी इट योर गाजा इजराइल वाला इशू. And they expressed concern. They said that violence is not the solution. We need to de-escalate it as soon as possible. तो यही सारी बातें इस पर्टिकुलर समिट में करी गई. Maldives and Mohammed Musa is the correct answer. Yes, absolutely. Maldives को हमने अभी recently डेट में फंस गया था. Maldives काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था. So we extended debt as well as currency swap agreements. Currency swap agreement is basically you need a particular currency. For example, Maldives need to pay some countries in dollars, right? And they don't have dollars. So we give them dollars and we accept their currency. कि हाँ ठीक है, अदली बदली कर लो करेंसी, हम आपको डॉलर देते हैं, आप हमें अपनी करेंसी दे दो, so that you can absolve yourself of your liabilities. So that is about the She meets Modi wala issue. Let's talk about the next issue, which is 2 years after launch, Delhi government has signed an MOU with the Education Ministry to implement the PM Shri scheme. PM Shri scheme की मैंने आपको full form बता दी. It is PM Schools for Rising India scheme. Education department इसको implement करता है, Ministry of Education. And अभी Delhi government ने बोल दिया कि we are ready to participate in this scheme and we want an implementation. तो उसके लिए MOU साइन हो गया. इस स्कीम का ओवरले आपको पता होना चाहिए. इसका ओवरले है 27,360 crores and this is going to cover 14,500 schools across India to make them institutions of exemplar education with the center. And क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम where the center would be contributing 60% of the funds and the state governments would be contributing the remaining of the funds. And this scheme is going to be in line with the new education policy of 2020. And उसके जो goals हैं उसको fulfill करने में ये पॉलिसी हमें मदद करेगी, हेल्प करेगी. काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक साइन नहीं करी है ये पॉलिसी, पहले साइन नहीं करी थी. तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, पंजाब, इन्होंने साइन नहीं करी थी. मल्टीपल इश्यूज थे. कुछ लोगों को स्कीम के नाम से इशू था, कुछ लोगों को स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में इशू था, बहुत सारी चीजें. तो मैं बात कर रहा था कि इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में. उससे पहले भी कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. हाउ मेनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैव वी हैड सिंस इंडिपेंडेंस? Do you guys know that? Mishika is saying, is this because their new CM is a former educator? It could be possible that they are emphasizing more on education, but in any case, it's a good thing. Krishna is saying, hello, I'm facing problems in CR classes. गलत हो रहा है concept. भाई गलत क्लास में पूछते हैं यार आप क्वेश्चन. आज शाम को है रीजनिंग की क्लास, 8 बजे आप आओ उस क्लास में. We'll address that question in detail. ठीक है? How you can increase your efficiency and accuracy in CR questions. Raj Nandini is saying, no idea. There have been 3 national education policies till date. जो नेशनल लेवल पे एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड पॉलिसीज थी. तो अगर आर्टिकल आ जाए इस पे, अगर क्वेश्चन बन जाए एजुकेशन पॉलिसी, तो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1968. ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल लेवल फ्रेमवर्क फॉर हाउ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द कंट्री. अगर आपसे इसका कमीशन पूछ लिया जाए कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी, तो दैट वाज द कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज ब्रॉट इनटू प्लेस. द सेकंड नेशनल पॉलिसी वाज ब्रॉट इनटू प्लेस. अब 68 का उल्टा कर दो, 86 में आई थी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. उसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स फिर सजेस्ट किए गए एंड फिर उसमें रिविजन्स किए गए इन द ईयर 1992. सो 1992 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, जस्ट द 86 वाली पॉलिसी
was reformed in nature. उसमें काफी सारे amendments and additions किए गए थे. So this was the second NEP. And then the third NEP came in the year 2020. यानी कितने साल बाद? 34 years बाद. After 34 years, we got another national education policy in the year 2020. This was the third national education policy. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्कीम, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंक्लूसिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें फॉर द वेलबींग ऑफ अ स्टूडेंट, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्वालिटी रिसोर्सेज दें. ड्यूरेशन इस स्कीम की ये थी कि 2022-23 में स्टार्ट होगी एंड 26-27 तक अपने गोल्स अचीव कर लेगी. तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं स्कीम को रन करते हुए. फीचर्स इसके क्या है? बेसिकली डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स को और ज़्यादा आप इनोवेटिव, एक्सपीरियंशियल, इंक्वायरी ड्रिवन, लर्नर सेंट्रिक बनाओ. उसके अलावा स्कूल्स में मॉडर्न लैब्स बनाओ, लाइब्रेरीज बनाओ, आर्ट रूम्स बनाओ, ग्रीन रूम्स बनाओ, वाटर कंजर्वेशन सिखाओ, वाटर रिसाइकलिंग सिखाओ, अच्छी फैसिलिटीज दो, स्मार्ट स्मार्ट रूम्स, कंप्यूटर लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, इंटीग्रेटेड साइंस लैब्स, वोकेशनल लर्निंग लैब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. एंड बेसिकली आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस पे फोकस्ड होने चाहिए rather than जस्ट थ्योरेटिकल रोट लर्निंग जैसा कि हमारे स्कूल्स में चलती है. एटलीस्ट जब मैं स्कूल में था तब तो बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस नहीं था. बट लकीली आई हैड गुड टीचर्स हु यूज्ड टू ट्राई देयर बेस्ट टू गिव प्रैक्टिकल एजुकेशन एज मच एज पॉसिबल. बट या, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से स्कूल्स में इंप्लीमेंट होगा, दिस वुड नॉट बी फॉर प्राइवेट स्कूल्स ऑब्वियसली. दिस इज फॉर सरकारी स्कूल्स, स्कूल्स मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज वाले स्कूल्स. And apart from these schools, Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas are also going to be under the aegis of this particular PM Shri scheme. ठीक है जी. सो 5 years की स्कीम है, 2 साल हो चुके हैं, 26,000 समथिंग करोड़ का ओवरले है, 14,500 स्कूल्स है इसके अंडर. एंड कौन से स्कूल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. सो आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पीएम श्री स्कीम. ओके, चलो let's move on to the next article which is regarding the Manipur crisis. So Manipur crisis किन दो tribes के conflict के बीच में था primarily? Which were the two tribes? Can you tell me in the chat box very quickly? Which were the two tribes involved in the Manipur crisis? Krishna 8 बजे class, 8 p.m. today. Anshika is saying Samagra Shiksha scheme is mentioned in the article. That is not that is a different scheme in a manner, but again related to education. And ये जो scheme है PM Shri scheme, this comes under the Shiksha scheme. समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर ही आती है आपकी PM Shri scheme. So that is more of an umbrella scheme. This is more of a specialized. मीटी एंड कुकी ट्राइब्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हिल ट्राइब्स थी वहाँ की, मीटी एंड कुकी, एंड में काफी ज्यादा वायलेंस चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था. अब सिचुएशन धीरे धीरे थोड़ी सी बेटर होनी स्टार्ट हुई है विद द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट. कौन सा आर्टिकल कहता है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट में एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दैट? That it's the responsibility of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. चुका हूं मैं आप लोगों को. नहीं निशिका, it's not article 352. 352 is national emergency. It's article 355. Article 355 talks about the responsibility of the union government to establish and maintain peace and protect states from any external aggression or internal disturbance. 56 होता है स्टेट इमरजेंसी, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है, ये इमरजेंसी वाले तो आपको अच्छे से प्रोविजन सारे पता होने चाहिए. कितनी बार इमरजेंसी लगी है ये भी पता होना चाहिए, कब कब लगी है वो भी पता होना चाहिए. ये रिसेंटली आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार. सो वापस उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट दिस आर्टिकल अगेन emphasizes the importance of article 355 and he's saying, the article is saying कि diversity management is a unique feature of the constitution and this has helped us a lot in solving problems in other states जहाँ पे diversity बहुत ज़्यादा थी and उस वजह से ethnic clashes या religious clashes हो रहे थे. They give you example of JNK, Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, basically all the northeastern states and some mainland states as well. तो इसके लिए किया क्या गया? इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए गए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, किस ईयर में बना था? उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस लाए गए थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया? डू यू गाइस नो द ईयर? द एक्सेशन ऑफ सिक्किम टू इंडिया हैपेंड इन व्हिच ईयर?
कौन सा था वो साल? नो आइडिया। इट वाज 1975। ठीक है, 1975 में सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड उसके इंक्लूजन के लिए आर्टिकल 371F विच वाज अ स्पेशल प्रोविजन हम लेके आए सो दैट द पार्लियामेंट कैन प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज दे आर काफी कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन लैंड एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वी ब्रॉट स्पेशल प्रोविजंस एंड उसी तरीके से बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्ट करते हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के प्रोविजंस को। जैसे अगर मैं बात करूं 371 की, तो 371 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A बात करता है नागालैंड की, बी बात करता है असम की, सी बात करता है मणिपुर की, डी बात करता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की, ई बात करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आंध्र प्रदेश की, एफ बात करता है सिक्किम की जो मैं आपको भी बता रहा था, जी बात करता है मिजोरम की, एच बात करता है अरुणाचल प्रदेश की, आई बात करता है गोवा की, जे बात करता है कर्नाटका की। तो ये आपको याद नहीं रखने, बट मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा था कि इतने सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बेटर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी। कौन से दो स्केड्यूल्स हैं जो बात करते हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्पेशल प्रोविजंस? स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का मुझे बताओ कौन सा स्केड्यूल है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ट्राइबल एरियाज का कौन सा स्केड्यूल है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आपको स्केड्यूल भी पता होना चाहिए, इसके आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। Which two schedules are we talking about? 6-7 या 5-6? 6-7 है या 5-6 है? 5-6 है। देखो फिफ्थ स्केड्यूल जो है वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। मैं लिख देता हूँ, जब मैं बताया करता हूँ ना ये चीजें, इनको नोट कर लिया करो। स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा स्केड्यूल बात करता है, अगर इस पे मान लो क्वेश्चन बन गया तो, क्योंकि इतना टाइम तक न्यूज में था ये कुकी मीटी वाला इशू, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिफ्थ स्केड्यूल टॉक्स अबाउट scheduled areas and scheduled tribes and their administration। अगर इससे आपका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल इज 244 क्लॉज 1। 44 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट scheduled areas and scheduled tribes and कैसे उनको एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल किया जाएगा। सिक्स स्केड्यूल आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, चार स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज अभी सिक्स स्केड्यूल में मेंशन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। AMTM। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, these are mentioned in schedule 6 of the constitution। tribal areas in these states are administered under schedule 6 for these four particular states and उसमें काफी सारे special provisions इनको मिलते हैं, district council, district commission का establishment and them taking a lot of autonomy and control। इसके भी अगर आपको articles पूछे जाए तो articles are 244 clause 2 and 275 clause 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, article 244 clause 2 and article 275 clause 1 related to schedule 6 of the constitution। ठीक है, तो ये यही था इस बारे में आर्टिकल, ही है कि हमें डाइवर्सिटी को केटर करना है रादर देन जस्ट वहां पे पुलिस भेज दो एंड वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा दो, उससे बात नहीं बनेगी। यू हैव टू ब्रिंग दोस टू डाइवर्स ट्राइब्स ऑन द सेम टेबल, initiate a dialogue, initiate negotiation between them so that long-term peace can be established rather than just using brute force, police force to separate them and to resolve the conflict। So the issue is about managing diversity। That is what the article is about। पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल है। त्रिपुरा का काफी डिटेल में एग्जांपल देता है कि कैसे त्रिपुरा में स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू हमने इंसर्जेंसी को और ये जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनको काउंटर किया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल which talks about the shifting sands within global supply chains। तो global supply chains basically हम अपना जो raw materials हैं, be it technology, be it your oil, be it other things, be it semiconductors, उसके लिए we are dependent on a lot of other countries, right? India as a country is dependent on a lot of other countries। We are not fully reliant in a lot of matters, be it crude oil, be it semiconductors, be it a lot of defense technologies, be it a lot of missile technologies। तो ये सारी चीजें हम import करते हैं। जब हम ये चीजें import करते हैं, we are obviously relying on a particular country to be fair to us। and अगर मान लो सिर्फ एक ही country पे हम rely करें for oil, let's say we just rely on Saudi Arabia for oil, would Saudi Arabia not try to exploit us because we do not have any alternative? Because that's what happens। अगर आपके पास एक ही option है
तो फिर you do not have more autonomy, you do not have more choices, you do not have more control over how trade functions. So यही है कि इसमें एग्जांपल्स दिए कि कैसे US is trying to counter the supply chain of China by imposing 100% tariff on Chinese EVs, ताकि उनका डोमेस्टिक मार्केट जो है फंक्शन कर पाए अच्छे से, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से बूस्ट हो पाए। एंड जो है चाइना का ग्लोबल सप्लाई ट्रेड पे जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। चाइना इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़े से बड़ी चीजों तक चाइना सब बना रहा है, सब चीज को ट्रेड कर रहा है, सब चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इट्स ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना एवरी पर्टिकुलर ईयर। रिसेंट अभी इकोनॉमिक सर्वे में हम देख रहे थे कि कैसे इंडिया चाइना का ट्रेड इज एट एन ऑल टाइम हाई एंड इज making new highs every particular year, despite the issues which we had with China। अभी तक जो tense situation चल रही थी on LAC, जो कि अब थोड़ी सी consolidate हो गई है, but despite that our trade relationships did not take a hit, we were making new highs every particular year। FDIs जो है चाइना से काफी कम हो गया था, अब वापस उसको बढ़ाने की बात चल रही है ताकि our manufacturing sector can be promoted। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो दैट वुड बेनिफिट अस मोर। रिसेंटली हम बात कर रहे थे कैसे वीजा नॉर्म्स ईज कर दिए गए फॉर चाइनीज वर्कर्स सो दैट दे कैन कम एंड अपस्किल द लेबर इन इंडिया, बिकॉज जो हमारी मशीनरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चाइनीज है, सारी हमने चाइना से ली है। रुक जाता है ऐसे जल्दी जल्दी बोल के रैप कर रहा था मैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जस्ट इन केस सम कैलामिटी हैपेंस, जस्ट इन केस सम ट्रेड रिलेशनशिप सफर्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर थिंग। लेट्स से अगर वॉर एस्केलेट हो जाता है और हमें एक साइड चूज करनी पड़ती है, यूएस की साइड जाना है या चाइना की साइड जाना है, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, राइट। एंड यही इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है ये आर्टिकल, बताता है कि टेक प्रोडक्ट्स के लिए हमारी रिलायंस किसी पे है, मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए भी मल्टीपल कंट्रीज में हमारी रिलायंस है, ऑयल के लिए भी मल्टीपल कंट्रीज। अब जैसे यूक्रेन एंड रशिया वाला इशू चल रहा था, तो उसमें भी try to benefit ourselves by importing oil from Russia by diversifying our supply chain। हमारा ऑयल तो ऑलरेडी आ रहा था ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, वेस्ट एशियन कंट्रीज से, बट हम रशिया के पास क्यों गए? टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन। तो यही है आर्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। मैं आर्टिकल पे वापस जाके आपको दिखा देता हूँ किस किस पॉइंट्स के बारे में ये बात कर रहा है। ये हमने कर लिया, शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मूव्स बाय यूएस एंड इजराइल पेजर अटैक। तो ये बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कि रशिया और चाइना का रिलेशनशिप इस समय यूएस के साथ कैसा चल रहा है। इसराइल का जो वॉर चल रहा है उस चक्कर में यूएस ने फिर चाइना को काउंटर करने के लिए टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया है। यहाँ पे एफिशिएंसी टू रेजिलियंस टू सिक्योरिटी की बात करें तो ये एग्जांपल दे रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया? व्हेन डिड द एलपीजी रिफॉर्म्स कम टू इंडिया? When did LPG reforms come to India? When did we become a globalized economy from a closed economy? 1991, absolutely correct. So when globalization happened, multiple things happened. First is we started trading with a lot of countries, our import and export increased, a lot of foreign investment came to India, a lot of foreign brands came to India। तो जितने भी आप ये ब्रांड देखते हो, be it McDonald's, be it KFC, be it car brands, all of these brands had no entry into India up till 1991। एंड जब हमने अपनी इकोनॉमी ओपन करी तो हमारा सप्लाई चेन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। अब दिस कुड बी अ गुड थिंग, दिस कुड बी अ बैड थिंग, दिस कुड बी अ बैड थिंग बिकॉज अब जब इतना सारा चीजें इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो क्या हम बूस्ट कर पाएंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और डोमेस्टिक सेक्टर को? बिकॉज चाइना आपको पता है कि कितना सस्ता सामान बनाता है। डू वी हैव द मींस टू मेक दैट गुड्स डोमेस्टिकली इन अ प्राइस विच इज चीपर देन चाइना? क्योंकि अगर आपके रिटेलर्स को या होलसेलर्स को या जो भी मार्केट फोर्सेस हैं उनको चाइना से सस्ता मिलेगा तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर से क्यों खरीदेंगे? आपको अगर चाइना वाले जो क्या कहते हैं चाइनीज लाइट्स जो आते हैं जो दिवाली पे लगाते हैं, अगर वो 50 रुपए की लड़ी मिल रही है आपको, 50 रुपए का आपको बंडल मिल रहा है, तो आप इंडिया मैन्युफैक्चर्ड 300 रुपए का क्यों खरीदोगे? आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ कॉमन कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली उसमें नेशनलिज्म आप घुसा दोगे कि हम एंटी चाइना और ये चाइना बुरा है और हमें हमें 300 का भी लेना पड़े तो हम स्वदेशी अपनाएंगे, 300 का खरीदेंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड होना हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो हमें इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है कि भाई अपना ही डोमेस्टिक सप्लाई खराब हो जाए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, इंडिया एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी। मैंने आपको बता दिया, टू बी सिक्योर, जस्ट इन केस स्ट्रेटजीज एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड हाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर सप्लाई चेन। Okay, let's go back to our topic। कमेंट सेक्शन में कुछ तो क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। इंडियाज हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम
चाइना, एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना पूछना चाह रहे हो आप या एक्सपोर्ट टू चाइना पूछना चाह रहे हो? द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. Kolabali is saying is Manthan 2.0 enough? I would say दोनों करो, Manthan and Manthan 2.0. Try to do both of them for a more comprehensive coverage. Chalo, let's move on to the next topic, which is काला आजार. तो काला आजार क्या है? काला आजार is a disease which we have eliminated. अभी recently हमने एक और disease eliminate किया था. Can you guys tell me the name? हिंदू एनालिसिस में डिस्कस किया हमने, एक हफ्ते पहले की बात है, I think, which is a disease related to the eyes, which India has recently eliminated from the country. We discussed this in the Hindu analysis. No, we are not talking about TB. टी सही नाम है लेकिन उस डिजीज का भी, और टीबी आइज का डिजीज थोड़ी ना होता है. तो जल्दी बताओ भाई मुझे चैट बॉक्स में. तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल रिसेंटली कह रहा है कि आफ्टर एलिमिनेटिंग द बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन व्हिच वाज, किसी ने बताया कि नहीं बता दिया, ट्रैकोमा. ट्रैकोमा की मैं बात कर रहा था. ट्रैकोमा को हमने रिसेंटली एलिमिनेट किया. इट वाज अ बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन एंड अब उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेटिंग काला आजार एज वेल. एलिमिनेशन का क्राइटेरिया क्या होता है इसमें बताया गया कि डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर डिजीज में केसेस 1 in 10,000 हो जाए ना फॉर 2 consecutive years, तो उसको माना जाता है कि वो एलिमिनेट हो गया. कि अगर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को पाया जा रहा है उसमें काला आजार, तो दैट मींस यू हैव एलिमिनेटेड द डिजीज. वो इतना ज्यादा छोटा नंबर हो गया कि आप उसको आप नेग्लिजिबली एलिमिनेटेड मान सकते हो. काला आजार की हम बात करें तो दिस इज द सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिजीज इन इंडिया. फर्स्ट पे गेस कर सकते हो कौन सा होगा? पैरासाइट से होने वाला डिजीज सेकंड नंबर पे डेडलीस्ट काला आजार था. फर्स्ट पे कौन सा होगा? इट्स अ मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज व्हिच इज ऑन फर्स्ट. कैन यू गाइस मेक अ गेस? तो हाँ, मैं आपको इस बारे में बता रहा था कि यूनियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के नंबर्स इस आर्टिकल में मेंशन है कि 595 केसेस एंड 4 डेथ हमने देखी थी इन द ईयर 2023. एंड 2024 की बात करें तो सिर्फ 339 केसेस एंड 1 डेथ हैज बीन रिपोर्टेड फॉर काला आजार. तो दैट मींस नंबर्स इतने ज्यादा कम हो गए कि वी कैन से दैट वी हैव एलिमिनेटेड काला आजार फ्रॉम द कंट्री. एंड इसकी वैक्सीन की भी बनाने की कोशिश चल रही थी बट अभी तक बन नहीं पाई है. काला आजार की अगर हम बात करें डिटेल में, काला आजार एज अ डिजीज स्प्रेड कैसे होता है? तो दिस स्प्रेड थ्रू अ स्पीशीज कॉल्ड सैंड फ्लाई. ठीक है, सैंड फ्लाई पास ऑन करती है इसको टू अ प्रोटोजोन कॉल्ड प्रोटोजोन पैरासाइट, जिसका नाम होता है लीशमेनिया डोनोवानी. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लीशमेनिया डोनोवानी. दिस इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट एंड इसका कैरियर होती है सैंड फ्लाइज. ठीक है, सैंड फ्लाई कैरी करती है एंड इस पैरासाइट को भेज देती है किसके पास? लीशमेनिया डोनोवानी. एंड फिर ये स्प्रेड होता है उस सैंड फ्लाई के थ्रू, है ना. तो इसका एक जो डेडलीस्ट फॉर्म होता है एंड इंडिया में जो पाया जाता है इज कॉल्ड विसरल लेशमेनियासिस. डिजीज का दूसरा नाम विसरल लेशमेनियासिस, वीएल भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, लेशमेनियासिस. सो हो सकता है इस नाम से आपसे पूछ लिया जाए. तो काला आजार का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए डिजीज का, तो दैट इज विसरल लेशमेनियासिस. दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ काला आजार व्हिच इज फाउंड इन इंडिया. मतलब इंडिया में एक ही पाया जाता है व्हिच इज दिस वन. ठीक है, अब इंडिया में 11.5% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है टू ऑल द ग्लोबल केसेस. तो अगर 100 केसेस हो रहे हैं तो उसमें से 11.5 इंडिया में हो रहे हैं. एंड वही है कि ट्रैकोमा जैसे हमने एलिमिनेट कर दिया वैसे काला आजार को भी हम ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुके हैं. दिस वाज आल्सो अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एंड इस वजह से डब्ल्यूएचओ वगैरह और बाकी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस इसकी बात नहीं करते बिकॉज ट्रॉपिकल डिजीजेस यूजुअली नेग्लेक्टेड रहता है. जस्ट लाइक ट्रैकोमा वाज आल्सो अ ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज, वैसा ही डिजीज है ये. एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि आपको स्पॉट्स हो जाते हैं ऑन योर स्किन एंड यू गेट रियली रियली सिक एंड यू गेट हाई फीवर. ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन. जैसा मलेरिया में होता है मोस्टली वैसे ही होता है, बट यू गेट चिकन पॉक्स टाइप के जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं ना, उस टाइप से इन्फ्लेमेशन हो जाता है बेसिकली स्किन पे. सो दैट इज द काला आजार डिजीज. दिस यूजुअली अफेक्ट्स स्किन सेल्स एंड वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाके लीजन्स क्रिएट कर देता है. इसलिए लीशमेनियासिस वहाँ से वर्ड आया, लीजन्स क्रिएट हो जाते हैं स्किन में. ठीक है, अब ये डिजीज जो है दिस स्प्रेड्स यूजुअली इन प्लेसेस जहाँ पे हाइजीन और सैनिटेशन इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं होता. दिस लीशमेनियासिस.
एंड वीक इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। तो जहाँ पे HIV और एड्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, जिन एरियाज में, जिन लोकेलिटीज में, जिन कंट्रीज में, वहाँ पे इसके प्रोपोगेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट करने से ही होता है। फीमेल सैंड फ्लाई जब बाइट करती है तो वो ट्रांसफर कर देती है इसको इनटू द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एंड वहाँ से फिर ये हो जाता है। इसको डायग्नोज करने के लिए काफ़ी सारी पैरासिटिकल किट्स आती है। RK39 डायग्नोस्टिक किट आती है जिससे इसको डायग्नोज किया जाता है। RK39, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर वायरस, एंड या इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है इंडिया से एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस के थ्रू। सो दिस स्प्रेड्स थ्रू अ पैरासाइट, एंड एंटी पैरासिटिक वैक्सीनेशंस एंड मेजर्स के थ्रू हमने काफ़ी ज़्यादा इसको एलिमिनेट कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज साइबर फ्रॉड लॉसेस could amount to 0.7% of GDP, says मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है थ्रू इट्स एजेंसी विच इज कॉल्ड द I4C। I4C की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया वुड बी लाइकली टू लूज 1.2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट ईयर टू साइबर फ्रॉड्स, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। एंड ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम ये जो लॉस होगा दिस वुड बी रिलेटेड टू ओरिजिन्स इन चाइना और चाइनीज लिंक्ड एंटिटीज, यानी कि चाइनीज लिंक्ड एंटिटीज की वजह से काफी ज्यादा स्कैम्स होने वाले हैं। इस वजह से 0.7% ऑफ GDP जो है हम लूज कर देंगे। एंड फिर इन्होंने बताया किस किस टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, कैसे OTP लोग दे देते हैं, ATM का पिन दे देते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। प्लीज बी अवेयर, साइबर क्राइम में मत फंसे। आप लोग स्मार्ट लोग हैं, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बताया करो कि OTP वगैरह नहीं शेयर करना होता, ATM पिन नहीं शेयर करना होता। बहुत सारे क्योंकि इनोवेटिव स्कैम्स आते रहते हैं हर दिन मार्केट में। एक वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक वेब सीरीज है, मूवी आई थिंक वेब सीरीज है, जम तारा करके। सो व्हेन यू गेट फ्री विद द क्लैट एग्जाम, मेक श्योर यू वॉच इट, काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अच्छी लगी। वो पूरा नेक्सस बताते हैं कि हाउ जमतारा इज अ प्लेस आई थिंक इन झारखंड जहाँ पे ये पूरा ऑपरेट करता है, एंड हाउ दे डू साइबर क्राइम्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ, तो ये आर्टिकल बताता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये स्कैम के जो है हब्स बन गए हैं। इन कंट्रीज लाइक कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस, जो कॉल सेंटर की तरह इसको ऑपरेट करते हैं, वहां से फिर कॉल्स करते हैं, डेटा लीक करते हैं। सबसे पहले इंडियन मोबाइल नंबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, फिर म्यूल अकाउंट्स जो है उनको टारगेट करते हैं, एंड वहां पे साइबर फ्रॉड्स करते हैं। That is what the article is all about, and how they are going to prevent such frauds by making a mechanism जिससे ट्रैक हो सके साइबर फ्रॉड्स, एंड डेटा थोड़ा और अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। डेटा प्रोटेक्शन ज्यादा बड़ा इशू है मुझे लगता है कि डेटा लीक ही क्यों हो रहा है, फोन नंबर्स लीक पहुंच कैसे रहे हैं स्कैमर्स के पास। तो डेटा का जो लीक है वो प्लग इन करने की ज्यादा जरूरत है। स्कैम्स पे तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्ट, ठीक है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करता है, एंड यूजुअली साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है, उससे रिलेटेड रिसर्च करता है, एंड इसका सेंटर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। So that is all about today's Hindu analysis. That is all you need to know about this particular article. इसको पढ़ सकते हो आप जाके। Let's do our vocabulary for the day. The first word is daft. Daft का मतलब simply होता है having or showing abnormal or sick state of mind. ठीक है, पागलपन, psychotic, mad, crazy, normal, wise, sensible are opposites. King was clearly daft, talking to trees and rocks as if they were people. ठीक है, सनकी इसको कहते हैं हिंदी में। आयर, आयर का मतलब होता है गुस्सा, डिस्प्लीज्ड, an intense emotional state of displeasure with someone or something. Indignation, anger, wrath are synonyms. Pleasure, delight, impatience are antonyms. Sentences: the patronizing comment from the snooty waiter roused her ire. क्या बात है, तीन और नए वर्ड सीख लिया आपने, patronizing, snooty, roused, ire। राउज मतलब भड़का देना, snooty मतलब एक तरीके से snobbish और rude कह लो। Patronizing is trying to act smart and superior. And let's move to the third word. Third word is genteel. Genteel मतलब होता है gentlemanly, like having and showing a lot of finesse, taste for fine arts and gracious living. Civilized, cultured, polished कह लो इसको। Uncivilized, ignorant, uncultured होगा इसके antonyms. The game seemed to be of a more genteel version of American football. ठीक है जी। So genteel is the first word. Ire means gussa is the second word. Daft, which means pagalpan, is the third word. That are the three words for the day. That brings us to the end of today's Hindu analysis session. I hope it was a productive session. काफी सारे interesting topics हमने आज discuss करे, काफी सारी details हमने जानी factual topics के बारे में। Malaria is the answer to that question, by the way. First number पे जो है, it's malaria.
ठीक है, चलो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम मिलते हैं दोबारा से 8 बजे इन द रीजनिंग क्लास। रीजनिंग क्लास का मुझे बताओ आप लोगों को कौन सा टॉपिक करना है यार आज। मैं सोच रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं, बट यू गाइस वर आस्किंग अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स जो रिसेंटली आप लोग बोलते रहते हो चैट बॉक्स में। मैं सोच रहा था कि शुड आई डू डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस, शुड आई डू सम अदर टॉपिक विद यू टुडेस क्लास। सो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस तो बता दो, वरना आई वाज प्लानिंग टू डू डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस, क्योंकि नए पैटर्न में वो आए हैं, काफी पूछे गए हैं डिसीजन मेकिंग वगैरह, प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी भी। डिसीजन मेकिंग कर ले, चलो ठीक है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इट इज देयर, इट्स डन। अरिंदम इज सेइंग एनालॉजी, एनालॉजी तो सिंपल होता है यार, एनालॉजी भी कर लेंगे चलो इन द कमिंग क्लासेस। एलेट के आर्गुमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन प्रॉब्ली डू दैट। आज डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे डिसीजन मेकिंग का, देन विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आई थिंक हम एक बार कर चुके हैं, अंशिका एक बार चेक कर लेना, अगर हमने नहीं किया तो वी कैन डू दैट इन द कमिंग क्लासेस। All right, that's all for today's class. I'll see you all again at 8 p.m. Please make sure you log in on time and come to the class. बढ़िया होने वाली है आज की क्लास 8 बजे। Till then, tata, bye bye, see you, take care, signing off.